बदलाव देखने को मिला। हमेशा प्रवीण पापा जो कि आगे आते हैं, लेकिन आज थोड़ा पीछे रखा है। तो दोनों बैलेंस टीम है, अच्छे टीम है, अच्छा मुकाबला होगा। कल का अगर बात की जाए, इसके जॉगिंग का एक अच्छा मुकाबला रहा था कल के दौर में, जो कि शाम के दौर में। और आज का पहला मैच मैं तो कहूँगा बिल्कुल शानदार मुकाबला रहा। ओवर पिच गेंद, मिड ऑफ पर मौका कैच का। थोड़ा सा प्लेसमेंट शायद इस बार कर नहीं सके। थोड़ा और पेश खेलते तो गेंद मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से निकलती, लेकिन कैच दे बैठे और पहला विकेट गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम का वापस। तो नूर भाई का भी आगमन होता हुआ आपका स्वागत। नूर भाई, बिल्कुल 2 दिन के साथ आप कुवैत भी जा रहे हैं, लेकिन अगले बार जब आओगे तो विराज के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना। चलिए जुड़ जाते एक बार फिर से इस मैदान पर प्रवीण नाइक और पापा हाथोड़ा बल्लेबाज, बड़े शॉट के लिए जाने वाला ये खिलाड़ी मैदान पर। लेकिन शुरुआत नहीं हुई अच्छी गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम की। शकील ने, अब्दुल सलाम ने सफलता दिला दी। मिड ऑफ पर एक अच्छा कैच और पहला विकेट वापस। आउट होकर वापस आनंद पाटिल सिर्फ 1 रन बनाकर, एक अच्छा ऑलराउंडर है आनंद पाटिल, लेकिन इस मैच में बिल्कुल निराशा हुई। अभिषेक नॉन स्ट्राइकर एंड पर। फुल टॉस गेंद, सुंदर शॉट इस बार मिड ऑफ पर। फील्डर गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक सिंगल बना स्कोर में। थोड़ा सा प्रवीण अपने आप पर नाखुश हो गए। मालूम था इस गेंद पर 4 रन होने चाहिए थे, चौके की मोहर लगनी चाहिए थे, लेकिन थोड़ा सा प्लेसमेंट अगल बगल में करते तो 4 रन बन सकते थे। सिंगल बना अपने खाते की शुरुआत इस 1 रन के साथ और स्कोर आगे बढ़ा 3 रन 1 विकेट पर। स्टार बॉयज की पूरी टीम पिछले 15-20 दिनों से काफी मेहनत कर रही है। सभी बिल्कुल मिलजुल कर, जो कि इस टूर्नामेंट के लिए कल इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन होगा। इस बार ओवर पिच गेंद विकेट कीपर के पीछे निकली, सिंगल बना। 22 का इशारा अंपायर का, खास करके काफी मेहनत मंसूर शेख बाबूश मंसूर शेख, बाबूश, नूर भाई, उनकी पूरी टीम काफ़ी जुड़ चुकी है पिछले 15-20 दिनों से। शायद बाकी का सब कुछ कामकाज बाजू में रखकर इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं और काफ़ी मेहनत के साथ आयोजन हो चुका है। बहुत ही शानदार आयोजन, आज का चौथा दिन। इस बार ओवर पिच गेंद खड़े खड़े मारना चाहते थे ऑन साइड पर। पावर प्ले का पहला ओवर, बहुत अच्छी शुरुआत सामने प्रिंट जोन क्रिकेट टीम की, एक सफलता दिला दी। आनंद पाटिल को पहला वापस भेजा पहले विकेट के रूप में। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर के साथ धीमी शुरुआत मैदान पर 4 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। असलम बिल्कुल जो कि दोहरी भूमिका में है अंपायरिंग के साथ, जो कि ऑर्गेनाइजर भी, तो वो भी बहुत जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ। आज दर्शक भी काफ़ी जुड़ चुके हैं। कल छुट्टी का दिन है, संडे है, इतवार है, कल ज़्यादा दर्शक होंगे इस मैदान पर। और शाम के दौर में बहुत अच्छे मुकाबले वो भी देखने के लिए काफ़ी दर्शक होते हैं। आखिरकार कल शाम के दौर में जो कि अंतिम मुकाबला रहा था, बिल्कुल भारी संख्या में दर्शक थे इस मैदान पर। एक बार आप सभी का स्वागत, दर्शकों का, सम्मानीय अतिथि जो मान्यवर कक्ष में, उनका भी स्वागत। और बॉलिंग में परिवर्तन, सरफराज उर्फ चप्पू गेंदबाजी पर और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अभिषेक। पहला ओवर समाप्त 4 रन 1 विकेट पर। फुल टॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री पर, और जब तक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। एक फुल टॉस गेंद थे, लेकिन शायद थोड़ा सा तैयार नहीं थे अभिषेक। उनको भी शायद थोड़ी सी उम्मीद नहीं होगी कि इस तरह से पहली गेंद होगी। गैप में खेलते तो रन बनते, लेकिन फिलहाल सिंगल बना। 5 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट पर और स्ट्राइक एंड पर प्रवीण उर्फ पापा और सरफराज उर्फ चप्पू राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर।
ओवर पिच गेंद बल्ले से लगी, पैरों पे टकराई। ओह, नॉन स्ट्राइक गेंद पर खतरा था, लगभग करीबी मामला था, वहां पर बाल बाल बचे प्रवीण। मूल्य चषक की चर्चा हम करेंगे। तुषार नाइक जो जुड़ चुके थे कमेंट्री बॉक्स में, उन्हीं के साथ कृष्णा देव जी, और तुषार सर ने मुझे भी मौका दिया था उस टूर्नामेंट में। बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा था, एक अच्छा विकेट, आउटफील्ड भी बहुत अच्छा था और बड़ा आयोजन था इस टूर्नामेंट का। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, देखना होगा मिड विकेट बाउंड्री पर, कैच का मौका, कैच छूटा और गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। मिड विकेट बाउंड्री पर लगभग कैच को पकड़ा था फील्डर ने, लेकिन दूसरे तीसरे प्रयास में गेंद हाथों से फिसली और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। जो दर्शक मिड विकेट पर बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल इशारा किया कि ये चौका है, 4 रन। थैंक यू सर आप सभी का। और पिच गेट इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, नो मैंस लैंड में 2 फील्डर गेंद के पीछे। रियाज गेंद के पीछे, गेंद को फील्ड करते, जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी प्रवीण को, क्योंकि आनंद पाटिल बिल्कुल सस्ते में लौट चुके हैं। सामने बल्लेबाजी है, रियाज बिल्कुल हाथोड़ा बल्लेबाजी है, सरफराज उर्फ चप्पू है खेमे में, अब्दुल सलाम है, और हाल ही में बिल्कुल बड़ी ट्रॉफी जीती है, तो हौसला बुलंद है इस टूर्नामेंट के साथ। इस बार कारपेट के साथ शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, लेकिन दूसरे रन की संभावना नहीं थी मैदान पर। एक सिंगल बना स्कोर में। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल, 6 ओवर का मुकाबला आने वाला मुकाबला होगा, जो प्री क्वार्टर फाइनल का मैच होगा, जो 5 ओवर का होगा, 5 गेंदबाजों के साथ 1 ओवर होगा पावर प्ले का। लेकिन उससे पहले देखना होगा कौन जो कि सामना करेगा काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम के साथ अगले मैच में। यह मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि 2 अच्छे टीम है आमने सामने। आज उतनी गर्मी नहीं हो रही है महसूस मैदान पर, थोड़ी सी हवा बह रही है, उतनी धूप भी नहीं है मैदान पर, तो अच्छी बात है मैदान पर। सामने अभिषेक, अच्छी गेंद इस बार, सम्मानजनक खेला, लेकिन कवर पर फील्डर तैनात, गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। खेल इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त हुआ। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का, और पावर प्ले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर 12 रन 1 विकेट पर। पावर प्ले का खेल समाप्त, फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर प्लेट जोन क्रिकेट टीम के ओर से। अब मात्र दूर दूर दिखाई देती हुई फील्डिंग, 2 फील्डर पावर प्ले में, उसके बाद दूर दूर फील्डिंग और खुद का दूसरा, टीम का तीसरा। अब्दुल सलाम लाइन पर भटके, इस बार अपस्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन मिल गया। सर नीलेश नाइक, उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक, ये 2 अंपायर। तीसरे अब जो कि असलम शेख, कमेंट्री बॉक्स में सर हरीश काकोड़कर, मैं अशोक नाइक, हमारे साथ विराज तेंदुलकर पूरी स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। फुल टॉस गेंद, इस बार सिंगल बनेगा। मिड विकेट बाउंड्री पर सरफराज उर्फ चप्पू गेंद को फील्ड करते, सुंदर थ्रो, सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। फील्डिंग ताकत है इस टीम की, फील्डिंग बहुत अच्छी। काउबॉयज बाल्डी की हम चर्चा कर रहे थे फील्डिंग की, और इस टीम की भी चर्चा होंगी, तो फील्डिंग बिल्कुल अच्छी करती है। और फील्डिंग मैं तो कहूँगा
बहुत कुछ मैदान पर फील्डिंग के साथ हो जाता है, कई मुश्किल कैच, कई रनआउट का विकेट मैच में उल्टा पैर हो जाता है, फर्क कर देती है ये फील्डिंग। राउंड विकेट राइट आर्म, बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दो फील्डर को बीट करती हुई गेंद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छा शॉट इस बार, बल्ले के बीचों बीच ताकत थी, टाइमिंग थी, हाफ वाली पर थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, अभिषेक के बल्ले से पहला बड़ा शॉट। 2 फील्डर जरूर थे, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दूसरा डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन बिल्कुल प्लेसमेंट बढ़िया था, गेंद बीच में से निकली 4 रन के लिए। दूसरा चौका गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम की ओर से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आनंद पाटिल एकमात्र विकेट, 0। प्रवीण नाइक नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और सामने लेफ्ट हैंडर अभिषेक। थोड़ा सा फील्डिंग में फिर से परिवर्तन हो रहा है, मैदान कर कप्तान फील्डिंग को सजा रहे हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। अब्दुल सलाम अपने बॉलिंग मार्ग पर एक 15-16 कदमों का रनअप, और शॉर्ट पिच गेंद, यह मौका था बड़े शॉट का, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, पटकी हुई गेंद थी। इस बार थोड़ा सा कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया था अब्दुल सलाम ने, लेकिन बहुत जल्द पड़ नहीं पाए गेंद को। अभिषेक बल्ला घुमाया था, लेकिन गेंद उससे पहले निकली, गति थी इस बार रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बढ़िया थी, लेकिन गेंद हाथों से छूटी और सी बार से बाहर। 6 रन के लिए गेंद चली गई। 24 टोटल स्कोर, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन शॉट इस बार, कोशिश बढ़िया थी, शायद थोड़ा सा सरपराज तौर पर चप्पू नाराज दिखाई देते हुए फील्डर पर, लेकिन कोशिश बढ़िया थी। लगभग जो कि गेंद आखिर में हाथों से फिसले। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन, खुद जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक शानदार शॉट, चौका लगा इस ओवर में, एक छक्का लगा इस ओवर में अभिषेक के बल्ले से, और वो सामना करते हुए अब्दुल सलाम की गेंदबाजी का। बढ़िया शॉट बल्ले के बीचों बीच, इस बार ऑफ साइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर सिंगल बना स्कोर में, और 1 रन जुड़ गया। बहुत ही शानदार क्रिकेट, 2 बड़े शॉट के साथ सिंगल निकाला, और सामने प्रवीण नाइक उर्फ पापा को बल्लेबाजी को मौका दिया। स्कोर रुका हुआ 25 पर, तीसरा ओवर जारी, 8 रन के 7 रन बनते हुए 25, लॉस ऑफ 1 विकेट। 25 टोटल 1 विकेट पर 25 रन। अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अब्दुल सलाम अगली गेंद लेकर। छोटी गेंद, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, गेंद निकली बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर 1 रन, क्या दूसरा मिलेगा? डीप स्क्वायर लेग से फील्डर जब तक बैकअप कर रहे थे गेंद को फील्ड करते, 2 रन जुड़ गए। 9 रन के साथ रन बना रहे हैं गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम। टॉस जीता प्रिंस जोन साकवाल क्रिकेट टीम ने, और 3 ओवर का खेल, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 27, 27 रन 1 विकेट पर। क्या होगा आने वाले 18 गेंदों में, लेते फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में एक बार सर हरीश काकुड़कर के साथ। So after completion of 3 overs, the score is 27 for the loss of 1. Quite a decent score, but when you are playing against a strong team like Prince Zone Sakwar, you need to have a cushion of extra 10 runs in the completion of 6 overs. They are the champions of Muri Chashak 2 lakh prize, and all the best teams from Goa had played and fared in their tournament, and they defeated few of the strongest sides and crowned as the champion. Good unit in terms of batting, bowling department.
And so far, Abhishek and Papa doing a very good job. Very well left here from Abhishek. A very elegant left-hander. So far, 1-6 that has been hit by Abhishek. Good team, Ganpati Warriors as well. This time, very nicely hit for 6 runs. Waited onto that ball, waited quite long time and hit it magnificently with a straight bat for 6 runs. म्हळ्यार आमी रफीक शेख मामू हांकां येवकार करतात मॅच पळोवपाक. मामू तुमी मातशे येयात आनी तुमची बसका घेयात. Fourth over in progress. Score moves on to 34. Now you can see some momentum in fielding. They can understand that Abhishek is playing a good knock and he looks to be a class act. Left-hander, very steady. Doesn't play that cross-batted shot. Watches the ball very carefully. Once again, he waited for that. This time maybe slightly away from his reach and that was a slow off-cutter. So Abu seems to be bowling those slower ones more, those off-cutters against the left-hander. Once again, right in the block hole. This time he gets a single, gets Papa on strike. So both are good players. Papa is more so powerful striker in the leg side, whereas Abhishek is more sort of correct left-handed player. Watches the ball carefully and plays proper cricketing shots. Score is on 35 with just 3 balls bowled in the 4th over. Oh, what a switch hit. Take that, says to the bowler. I told you Papa has got the power on offside and on the leg side. Switch it. This is how you play. Now you can see there will be some chatting and there will be some movement where to set field. Once you play a switch it and that to a powerful one like this, now you can understand that this man has got a good switch it. Field rotates and it creates more opening in the fields. Still 2 balls left. Once again went for that leg spin. Papa says, I don't want to run a single because I am already on the ground. My knees are on the ground. So by the time I have to get up, I cannot reach the non-striker's end. This time he hit it, but I don't think so. He has found a gap. Hits it straight to Shakil. And he has to depart. Never mind, a good knock here from Papa for his team after completion of 4 overs. The score is 41 for the loss of 2 wickets.
Sangamesh starts off with a wide. This time, a big six. Or is it going to be taken? We got to see it. We we have to wait for umpire signal. Yes, we got to umpire. कोणायो पामेना कोणायो पामेना We are checking it. It's a save. He was in the air, both the legs were in the air, and the ball had left his hands. So it was a clear-cut save. 2 runs saved. Just missed by maybe half a meter, but lovely fielding here from the fielder at wide long on. Dilip. The fielder this time also hikes it in the mid-wicket region, wide long on. Once again gets a single. Sangmesh giving single, 4 runs of the first 2 balls. Score is 45. This time in the air, might be taken. Oh, lovely catch. This guy is a big man and he has to run quickly to take it towards his right hand side. So wicket taken here and Abhijit has to depart. This time in the air. And one more catch at long on region. So 2 wickets in consecutive balls. 45 for the loss of 4 wickets now. So Govind Bappa, he's coming on the wicket. Wonderful experienced player. He'll be keeping later on. Fantastic keeper as well. Will be at the non-strikers. But best thing is more strike to Abhishek. Will get more runs for Ganpati Warriors Usgaon. This has been a very good over. Just 4 runs coming off the first 4 balls. And on top of that, Sangamesh has taken 2 crucial wickets. This time he strikes big one. Full toss ball and Abhishek
with power hits it in the cow corner region for 6 runs. Score moves on to 51. They still require, I guess, another 15-20 runs. 70 might be a par score. This time in the air. This will be catch. Taken nicely. Sangmesh falls on the ground, but doesn't matter for him because he is the one amongst the bowler who has taken most wicket from his side. 5th wicket going down at the score of 51 in 5 overs. Sarfaraz. So Nandesh is the bowler. Nandesh will be bowling to Govind Bappa. Let's see what Govind Bappa has in stores in his batting armory. Experience. Oh, went for the big one. A different sort of action here from Nandesh. This time he goes, but he didn't time it well. Bappa just played a half-hearted shot, not a full-blooded shot, and gets rid of himself. Not a convincing-looking shot. So another wicket going down. रिक्वेस्ट करता स्कोर इज स्टील ऑन 51. रिक्वेस्ट करता यश प्रभुदेसाय मातसो हांगायो. यश प्रभुदेसायका रिक्वेस्ट करता मातसो हांगायो आनी मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दी. मॅन ऑफ द मॅच प्रिवियस मॅचीचो गेल्लो आसा नवदीप. सो हांव यशाक रिक्वेस्ट करता ताणें येवचें हांगा मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवचो. Sarfaraz on strike. Sarfu, fantastic player as well. I don't know why he's coming a little bit late. This is way too wide. Navdeep, matcha request Navdeepak. Navdeep matcha yo ani tuje man of the match prize collect kar. But this is slightly wide. Sarfaraz also can clear the boundaries with ease. So again, good shot, but there is a fielder. Riaz. Sarfu was injured in the previous season, where maybe this season, I guess, a little bit earlier. Finger was injured. I hope he has recovered by this time. Sometimes when you play with injury, then it takes even a bit more time to recover. So whenever you are injured or more injury prone, then you must take a little bit of rest. But now I guess he's fit and fine, Sarfu, and still at a non-striker's end, plays a single, gets Anirudh on strike. Once again, another good player. This time, can they get a single? Wonderful running. And are they going for the second? Sarfu says, no, I am not going to reach at that end. Let me take the strike. Score moves on to 54.
Still not gone to a level where you can make it difficult. But we have seen that 55, 60 runs have been scored by a team and defended. Yesterday, PFC, beg your pardon, SK Jogging had scored hardly 50, 52 runs. And then they managed to bowl 6 overs pretty decently and beaten the opposite side, City Thunders, who game. Meanwhile, back concentration on this match. Last 2 overs of the innings left. Once again, a good bowling, asking for wide, but this is a better line outside off stump and quick as well. Close-chested action from Nandish. This time, this is lovely shot in the covers. Surely they can get 2 runs at least. And 2 runs quite comfortably taken in the end. So after completion of 6 overs, Ganpati Warriors Usgaon has managed to score 56 runs. And they require 57 runs to win is Print Zone Sakwal. Print Zone Sakwal match begin करत. Already गणपती वॉरियर्स उसगांव ग्राउंडार पाविल्ले आसा. मातशें रिक्वेस्ट करता टायम चड काडनाकात आनी जाता तितले बेगीन ग्राउंडार देवात.
So Pradeep Navelkar going to start the proceedings here for Ganpati Warriors Usgaon. And the man on the wicket, opening batsman, Sangmesh and Chappu. So Sangmesh and Sarfraz Nawaz, who is popularly known as Chappu, as have been sent as the openers by the captain. Let's see what they have in store. So not a big total to be chasing. 6 overs, 57 runs is the target. So if you look carefully, then they have to take wickets. A strong batting lineup of Print Zone Sakwar, who are actually known as Strong Boys of Sakwar, but now they have changed their name to Print Zone. Oh, went for the slog sweep and way away from that square leg region fielder. Starts off with the boundary, Sangmesh. They are very good in finding the gaps. Whenever you see this team from Sakwar playing, they will try to see where are the gaps and play accordingly. It's not necessary that you have to hit every ball for sixes. There are wide open spaces in many regions. Deep fine leg, long on, long off, or maybe in the point region. So definitely they are going to find the gaps. This time he went for the switch hit. You see that they are playing with the minds of the bowler. This is a game that they are used to playing, not giving a clue. Sometimes when you play a normal sweep shot, the captain rotates the field from the leg side more towards the square leg. Then they go for the switch hit. So it's about playing and using their minds better than the bowler. Oh, lovely shot, but very nicely fielded by Abhishek at a point region. Otherwise, this could have been a boundary. Score moves on to 6. So it's around 9 runs per over required. So maybe a boundary in every over will do the job for them. Went for that shot in the mid-wicket region. Very nicely bowled by Pradeep. But one thing for sure, whatever chances comes on their way, Ganpati Warriors Usgaon, they have to take it. Because second chance won't be given by this batsman. And if you want to get back strongly in this match against this strong team of strong boys, which are not popularly known as, this is in the air and this is gone out of the ground. One ball in the slot. He goes for a big shot and he gets the big one. So wonderful strike here from the bat of Sangmesh. Score moves on to 12. Just cannot miss your line and length a bit against these top class players. Need to be on the button, on the mark, every ball. This time he goes for the switch. This is much better. Both the sides become your offside. Good umpiring here from Nilesh Naik and good bowling from Pradeep Navelkar to finish with a dot ball. 12 without loss in 1. So Anand Patil, one of the best all-rounders in Usgaon, Darbandara region. Although could not do much with the bat, went out on one, but he definitely going to showcase, or he would like to perform as a bowler in this match against Chappu. So wonderful start here. Good bowling from Anand Patil. Winners of many Man of the Match, Man of the Series award in different tournaments held across Goa, in the Jinora Premier League and the Tiska Premier League and many other tournaments.
So wonderful player. And a great fielder as well, quick fielder. He has to get some wickets through his bowling. Otherwise, things will be looking very difficult for Ganpati Warriors Usgaon. This time in the air. What a lovely shot. Inside out. Found the gap. Nothing wrong with that ball. Absolutely nothing wrong. But the shot was classic one. This is what I tell about this team. They play with the field. They exactly know where the fielders are, and they will find the gaps. Lots of open spaces on the offside, on the leg side, power play overs. So once you play it over the fielders, then it's definitely a boundary. This time he goes for the slog sweep. Fielder is placed in the deep square leg region. So single taken. Score moves on to 18. 6 runs have come of the first 3 balls. Now Chapu on strike. Chapu goes for the shot. Slog sweep, sweep shot. Only a single. Otherwise, if he found a gap, then he could have got a boundary. But if you look carefully, he played that for a boundary. Maybe finding a 1 bounce for 4, but straight to the man. This time it should be taken. Anand Patil says it's my catch, and he takes it easily. So Sangamesh departs in trying to get a lofted shot over a long on region, and Anand Patil strikes. Well, now in comes the big man. Well, while he was getting ready, Mansoor was watching him carefully, calculating his height and weight, how big this man is. And I guess he is still calculating. Big man, Riaz. Well, I was in the Muli Cheshire where I was doing the commentary, and that time they were playing against a team from north, I guess, Asnora. And the strong boys, they were not in a great position, but in comes Riaz and scores 6 sixes of 6 balls in Muli Cheshire and wins it one-sided for his team. He can clear boundaries at ease, at will, and everyone will be looking to see this big man from Sakwar. Oh, that's a lovely shot. Is it going for 6 runs? Yes, it does. Chapo goes for the slog sweep and gets it perfectly right. So 6 runs will finish over number 2 as well. And once again, an expensive over compared to the required run rate. After 2, the score is 25 for the loss of 1. So here comes the big man Riaz on strike for the very first time. Abhijit. The 25 on the board, 57 is the target. Oh, went for that big one, but getting an inside off the bat.
And thank you to Mansoor. He understands that the heat wave is going on in Goa, and and Devidas Palekar has sponsored. Thank you, Devidas Baba, for the wonderful sponsoring of Lassi, because it's the time where heat wave is going on in Goa, and we need to get ourselves cooled down. This time, this is lovely shot. I told you before only, don't err in length, don't ball anywhere wrong. They are going to find the fields. It is not necessary here to play pull shot because both the fielders are there inside point and short covers. He goes up over the point and gets a boundary. This is a smart piece of batting. Score moves on to 30. This time just a this time in the air, but yes, the ball has not reached anywhere. Sarfaraz drops it. He was in the position all the while. Everyone thought that he's going to take it quite easily, but he drops the catch of a big man. This might be the dent in the car, a dent in the team, dent in fielding that might cause them a big way. Score moves on to 32. A chance gone begging of the big man. In plays Sarfu, a wonderful shot. Short arm flick down on the leg side for only a single. This has been a very good over from Abhijit so far, but still one ball left. If this goes for 4 or 6, it might be costly. Well, a lovely piece of bowling here. Defended it very well. It's not that he has got the shots, the big shots only. He can play with soft hands as well and get a single. After completion of 3 overs, the score is 34. So in another 18 balls, 23 runs required. Not a big target to chase here. Going very smoothly and steadily, print zone from Sakwar. Meanwhile, I will change over the mic and hand over to senior commentator Sir Ashok Naik. थैंक यू हरीश सर। 18 गेंदों का खेल बाकी और 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 23 रन। थोड़ा सा शायद ढीला मैच हुआ हो मैदान पर। अगर कैच को पकड़ते तो गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम के लिए बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कैच छूटा और देखना होगा उस कैच के बाद मैदान पर क्या होता है। सामने रियाज 3 पर खुद के व्यक्तिगत, एक चौका, एक छक्का सरफराज की बल्लेबाजी पर, और वो ही बल्लेबाज और बॉलिंग में परिवर्तन अनिरुद्ध गेंदबाजी के मोर्चे पर। कहीं ना कहीं 1-2 शॉट पीछे रह गई गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम। एक दो शॉट और होने चाहिए थे स्कोरिंग में। गणपति वॉरियर्स कम से कम एक 70-75 का अगर इस विकेट की मैदान की बात की जाए। बड़ा शॉट इस बार, क्रैकिंग शॉट मिड विकेट सीमा रेखा पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। बिल्कुल हमारे नूर भाई को भी शायद गेंद को ढूंढने के लिए जाना पड़ा मैदान पर। बड़ा शॉट, देखो कैच छूटा, कैच के बाद ये बड़ा शॉट। छह रन स्कोर के खाते में। 17 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और मैच को जीतने के लिए 17 रन। अब बिल्कुल गेंदों और बराबरी का मुकाबला करीब आ चुका है। 17 गेंदे 17 रन मैच को जीतने के लिए। जो जीतेगा वो खेलेगा काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम के साथ, जो प्री क्वार्टर फाइनल का मैच होगा, 5 ओवर का मैच होगा। आने वाले मैच अब 5-5 ओवर के हो गए।
देखना होगा समय किस तरह से इससे जो मिलता है, जिस तरह से समय मिलेगा 6 ओवर का होगा, नहीं तो 5। ओ ये मिस टाइम कर बैठे, ये मौका बना, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर, और इसी के साथ दूसरा विकेट वापस, रियाज वापस खुद के व्यक्तिगत एक छक्का लगाकर 9 पर। टीम का स्कोर टोटल 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस मैच समाप्ति के साथ हमारे डीजे मैन दिनू वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे बीच बीच में, लगभग 1:30 यानी अगले मैच के समाप्ति के बाद। लेकिन फिलहाल वापस दूसरा विकेट निकलता हुआ 40 रन 2 विकेट पर, और अब्दुल सलाम मैदान पर सरफराज का साथ देने के लिए। मंसूर भाई 2 रख दे अंपायर के लिए, 2। नए बल्लेबाज मैदान पर फिलहाल स्ट्राइक इन पर सरफराज पर चप्पू, और अपने बॉलिंग मार्ग पर सफलता हासिल करते हुए मैच अभी भी कमबैक हो सकता है। 1-2 विकेट अगर जल्द लेने में सफल रहे तो मैच में अभी भी कमबैक कर सकती है। अच्छी गेंद डीले हाथों से सिली मिडान पर अपने पालोत्रों में जब तक जाते गेंद को फील्ड करते, 1 रन मिल गया। 16 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और मैच को जीतने के लिए 16 रन मैदान पर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर देवीदास पालेकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ रिवर्स का प्रयास, टाइमिंग अच्छा नहीं रहा इस बार गेंद पर अब्दुल सलाम का। बिल्कुल हमारे नूर भाई भी लस्सी पी रहे दिखाई देता हुआ, थैंक यू सर। लगभग धीरे धीरे तैयारी कर चुके हैं, और इसी बीच अगली गेंद कट किया, इस बार ऑफ साइड पर पॉइंट पर हवा में थोड़ा सा शॉट, ये कवर पॉइंट बाउंड्री पर। 1 रन तेजी के साथ उतनी ही शानदार फील्डिंग। बिल्कुल ये मैच गेंदों और रनों के साथ साथ चल रहा है मैदान पर। 15 गेंदों का खेल और अभी भी जीत 15 रन दूर है। एक कैच छूटा, वहीं पर छक्का लगा रियाज के बल्ले से, वही ना कहीं ये वो शॉट शायद मैच को थोड़ा सा ठीक ठाक करके गया। सफल हुए, देखना होगा मौका बनेगा, शॉट फाइन लेग पर, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई गणपति वॉरियर्स उसगांव क्रिकेट टीम मैच में कमबैक करती हुई। कल शाम का मैच एसके जॉगिंग क्रिकेट टीम का मुकाबला, अगर शान स्ट्राइकर की बात करेंगे वो मुकाबला इसी तरह से आखिर ओवर में जो जीती हुई मैच थी वो दोनों टीम हार कर सामना करने पर इस टूर्नामेंट के साथ वापस जाना पड़ा। एसके जॉगिंग क्रिकेट के लिए बिल्कुल आसान मौका था। अंतिम ओवर में पहली गेंद पर छक्का, 5 गेंदों में 6 रन, और शाम के दौर में शान स्ट्राइकर क्रिकेट टीम के लिए तो मैं कहूंगा बिल्कुल 6 गेंदे और 5 रन। बाबल जोरे फुल टॉस गेंद पर गलती कर बैठे, और वहीं पर सावर्डे बॉयज क्रिकेट टीम ने मैच को जीता दिया। बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही अनिश फोंडेकर की, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही। तो फिलहाल देखना होगा, कमबैक कर रही है गणपति वॉरियर्स क्रिकेट टीम। स्कोर टोटल हो चुका है 42, टोटल स्कोर 42 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 टीम सेमीफाइनल में, रोहित क्रिकेट वास्को, धीरज 11, असनोडा, और कल के दिन में सावर्डे बॉयज आज चौथी टीम। और कल फाइनल के 2 मुकाबले सेमीफाइनल के 8-8 ओवर के, और फाइनल का मैच होगा 2 इनिंग का टेस्ट क्रिकेट होगा, 5-5 ओवर के मुकाबले होंगे जो इस मैदान पर। बिल्कुल कुछ न कुछ हाल ही में कुडाल में यही फॉर्मेट किया था, और इसी मैदान पर वो कल जो कि फॉर्मेट, नया फॉर्मेट। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन के बॉलर के पास से लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर सिंगल बना, अब्दुल सलाम 1 रन पर, और नए बल्लेबाज मैदान पर दीपक आ चुके हैं। स्कोर 1 रन के साथ से 43 रन।
अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर सम्मानजनक खेला। सिलमिडा पर अपने फॉलो थ्रू में आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। एक रन, एक एक रन काफी कीमती साबित हो रहा है इस मैच में। टारगेट 57 का और स्कोर 44 रन। 13 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल मुकाबला अच्छा हो रहा है मैदान पर, शानदार मुकाबला। अब्दुल सलाम स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का अभिजीत की गेंदबाजी का। ओह, इस बार अल्टी पल्टी कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर से गेंद दूर। अब्दुल सलाम के बल्ले से गेंद 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर। 50 रन इसी के साथ पूरे हुए। तो काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम कैप्टन आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम 7 रन चाहिए। इस शॉट ने फिर से मैच को बना दिया। सिंगल बनेगा क्या, दूसरा रन देखना होगा। और हम बिल्कुल यहां पर आमंत्रित करेंगे, आइए सर सिद्धेश भी से। सर आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत। सोशल वर्कर सर सिद्धेश भी से, सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। आइए प्लीज मंच पर तशरीफ रखिए। बड़ा शॉट ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सिंगल। 1 रन और बन गया स्कोर में। इस ओवर में रन, एक शॉट बड़ा लगा और उस शॉट के साथ थोड़ा सा मैच में फिर से प्रिंट जोन सकवाल क्रिकेट टीम ने अपना पकड़ जो कि बना दिया मैदान पर। देखना होगा, फिलहाल खेल अभी भी बाकी है। स्ट्राइक एंड पर अब्दुल सलाम, नॉन स्ट्राइकर एंड पर 2 पर दीपक बल्लेबाजी करते हुए। खेल जारी 5वें ओवर का, आने वाला 1 ओवर अभी भी बाकी और देखना होगा अगली गेंद पर क्या होता है। आगे निकले, बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर। नूर भाई को बिल्कुल जो कि जाना पड़ा गेंद को लाने के लिए। तो इसके साथ ये मैच समाप्त होता हुआ। और आइए काउबॉयज बाल्डी क्रिकेट टीम कैप्टन, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा गणपति वॉरियर्स, आपके लिए 57 का टारगेट 70 का होना चाहिए था। आखिरी ओवर में रन नहीं बने, आखिरी ओवर में बने सिर्फ 5 रन, जो 2 शॉट बनाने चाहिए थे। 2 शॉट कम हो गए स्कोरिंग में। 70 का टारगेट एक अच्छा टारगेट होता सामने, लेकिन फिलहाल इस टूर्नामेंट के साथ जरूर आपको रुकना पड़ेगा। आपका अभिनंदन, आपने हिस्सा लिया। आइए ले चलते जो मैन ऑफ द मैच के साथ इस मैच का संगमेश मैन ऑफ द मैच, संगमेश मैन ऑफ द मैच। और आइए टॉस के लिए दोनों कैप्टन, 5 ओवर का फ्री क्वार्टर फाइनल का मैच होगा।
स्वप्नेश, तो समय नाइक और स्वप्नेश गावकर, संगमेश मैन ऑफ द मैच। संगमेश, चलिए संगमेश मैन ऑफ द मैच के लिए। समय और तो बहुत ही अच्छा मैच समाप्त हुआ और अगला मैच 5 ओवर का होगा जो काउबॉयज बार्ली और प्रिंट जोन साकड़ी के संकल के बीच में